morning. And today I've got the opportunity to give you the briefing of one of the important subjects in the English grammar for the class 8. And this is my first session because in the next I will be taking other classes also. So for it is a record, it is the first class for the class 8. The topic I am going to take, that is, I have mentioned it is a sentence. I'll just show you in a highlight that how the sentence has been categorized or this sentences has been defined. I think it is visible to all of you, right? Okay. Now you see, when we study the English grammar, the start with the definitely is the alphabets, A, B, C, D we know. Then it comes that alphabets, the letters A, B, C, D, E, F, that up to the Z, capital and small, these are called the letters. Now we studied in our childhood that a alphabet, then it letters, then this letter, a group of letter constitute one word. When we can call is a word, when there is a group of word, a group of alphabets that has got some meaning, it gives some sense, then it is a word. Similarly, now comes to the sentence. What is sentence? Then it means the alphabets, then the words, and now we are going to study the sentences. Here the sentences, what is the sentences actually? The sentences is a group of words, that is एक साथ बहुत सा ग्रुप वर्ड्स रहेगा, आपका शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं वो ग्रुप रहेगा, then it can create a sentence. That is a condition that it should give the complete meaning of that sentence. So I have mentioned the sentence can be described as a group of words which gives you a complete meaning and sense. It means when you write a group of words, it should have the complete meaning. Then we can call it a sentence. Otherwise, it is not the sentence. It can be the different part of the grammar, but it is never be a sentence if it doesn't give the full meaning or complete meaning. This is a sentence. Now the next question comes that how the sentence has been categorized, or do you see the common type of sentences in our languages? No. Every time when we speak our languages, we can use the different mode of different kind of sentences in English or Hindi, in any subjects. For example, when I ask you some questions, if I say, what is your name, is a type of sentence. If I ask that bring that duster, is a different kind of sentence. When I ask that, okay, you are a very good boy, it means there is a different kind of sentences. Sometimes I wish many happy returns of the day, it is also the different kind of the sentence. Similarly, we can see that in English the sentence has been categorized more or less. It is in the mainly of the 4 types. Another types is there 4 plus 5, that is we call the optative. What we call optative, it means there are the 4 types of sentences. I said first is a declarative sentence, then it is an imperative sentence, then is an interrogative sentence, then is an exclamatory sentence, then is a optative sentence. Now you may ask you, what is the meaning or what are this meaning of the sentences? One by one we will see. First is a declarative. Declarative means when you say a sentence. For example, Patna is a city. Patna is the capital of Bihar. India is a great country. It is the greatest country. These are all the statements, simple statements. Neither it is a question nor it is a request. It is a simple sentence. When these are the simple sentences, we call is a declarative sentences. And this declarative sentence further can be divided into 2 types. That is affirmative and another is a negative. What is the meaning of affirmative? When there is a positive sentence. If I say Patna is a clean city, so it is affirmative, that is a positive, somehow it is a positive part. When we call is a negative, Patna is not a clean city, we can call is a negative sentence. But both comes under the one sentence, that is a declarative sentence. So in a nutshell we can say declarative sentence can be the affirmative and can be the negative sentence. Now next come to the next.
that is a imperative sentences. What is the meaning of imperative sentences? Sometime you have seen in our languages, in our statement, in day-to-day activities, we have seen the peoples or we give the orders, we give the directions, we give the advices, we give the request. Always we give the request. So these things, when it comes under a sentence, those sentences are known as a imperative sentence. It means imperative sentence can be in form of order, it can be in form of direction, it can be in form of advice, or it can be of the request, and it ends up with a full stop. You can distinguish between the declarative and imperative. Next comes to the interrogative. इंट्रोगेटिव का मतलब है हम जब सवाल पूछते हैं, व्हेन आई आस्क द क्वेश्चंस. क्वेश्चन कई तरह का हो सकता है. हम लोग जानते हैं व्हाट से क्वेश्चन हो सकता है. जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, where is my pen. These are the what, where, how. These are the one kind we call is a WH questions. And when if I ask you can you do it, क्या आप ये काम कर सकते हैं, will you do it, क्या आप ये काम करेंगे. So ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्लोज क्वेश्चंस बोलते हैं. इसका मतलब क्वेश्चंस कैन बी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, बट ये जितने भी क्वेश्चंस से, ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन से जितने भी सेंटेंस बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव इज द वर्ड ऑफ द इंटरोगेशंस. हम लोग आए दिनों में देखते हैं पुलिस ने उसका इंट्रोगेशंस किया. इसका मतलब क्या होता है, पुलिस ने उससे पूछताछ की या छानबीन, मतलब पूछताछ उनसे कर रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. राइट, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. एंड देन इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये क्या सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है हमारे आए दिनों में होता है, हम इसको यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए कभी एंगर में, मतलब हम बहुत गुस्सा आ गए तो कुछ शब्द हम यूज करते हैं. जब हम किसी डर में होते हैं तब हम यूज करते हैं, या हम कोई शॉक हो जाते हैं किसी घटना से, उससे शॉक होते हैं तो भी हम कुछ अजीबोगरीब स्थिति में कोई अजीबोगरीब शब्द मेरे मुंह से निकलता है. या डिलाइट, मैं जब भी खुश होता हूँ, हम लोग आए दिनों देखते हैं ना, ओ माई गॉड, व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम. ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं वो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. राइट. एंड नेक्स्ट इज अ फिफ्थ, दैट इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है जब हम किसी को विश करते हैं. कैसा विश करते हैं? जैसे हम लोग बर्थडे या किसी का एनिवर्सरी या कोई अच्छी चीज़ों में हम लोग बोलते हैं ना, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. तो हम लोग जैसे विश करते हैं, विश वाला जितना भी सेंटेंस होता है वो सब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में. आई थिंक दिस इज अ क्लियर टू यू. अगर हमसे कोई पूछा, हम बता सकते हैं व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब क्या होता है. एग्जाम्पल में जैसे मैंने सेंटेंस बताया, I can work for 20 hours in a day. 20 hours in a day. Hours in a day. इसका मतलब हुआ एक दिन में मैं 20 घंटा, मतलब 24 घंटा का दिन होता है, मैं 20 घंटा काम कर सकता हूँ. ये देखिए कहीं ना कहीं दिस सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेंस. तो हम ऐसे को सेंटेंस बोलते हैं. सेंटेंस को अगर हम रिकैपिचुलेट करें फॉर यू अंडरस्टैंडिंग, इस सेंटेंस को हम फर्दर 5 काइंड में डिवाइड कर सकते हैं. व्हाट आर दिस थिंग्स? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव या नेगेटिव में बांट सकते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब WH क्वेश्चंस है, या हमारा क्लोज क्वेश्चंस भी हो सकता है. देन इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देन इज ए ऑप्टेटिव सेंटेंस. सो ये पांचों सेंटेंस को मैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप में कभी कभी बहुत सा डाउट्स होता है, क्योंकि सिंस इट इज़ अ मोनोलॉग, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिख देता हूँ. दैट विल हेल्प यू. माई फ़ोन नंबर इज जस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू. This is one of my number, 9386696033. My name is Saurav. You can definitely refer, and if you have any questions, Saurav, if you have any questions, you can ask me. Okay, good day and see you.